नमस्कार दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किसके पास होती है? इट इज ओनली विद द पार्लियामेंट। बट क्या पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड होती है या इट कैन ऑल्सो बी कर्टेल्ड? पार्लियामेंट किसी भी तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ सकती है या उसके पावर पर कुछ रुकावटें होती हैं। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड अलोंग विद इट the basic structure of the Indian Constitution. Now, what is the basic structure of the Indian Constitution? It is judicially evolved doctrine जो बोलता है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की सारी पावरें हैं, सारी ताकतें हैं, बट अमेंडमेंट करते समय यह बात का ध्यान रखना है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहीं अमेंड ना हो और कहीं डिमिनिश ना हो जाए। सो वेलकम टू यूपीएससी प्रेप चैनल ऑफ श्रीराम्स आईएएस। वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टुडे अबाउट the basic structure of the Indian Constitution. Welcome to this series of Mastering Indian Polity through Mind Maps. Let's begin our video. Now, before I start, I would like to tell you about this big Diwali Dhamaka offer where Shriram's IAS is giving you or presenting you a flat 75% off in GS Foundation courses such as 1-year course and 2-year course, and this offer will be available only from 15th of October to 19th of October. So do avail this offer in Shriram's IAS. Let's start with our lecture on basic structure of the Indian Constitution. कुछ बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ, इसका पर्पस क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात है, इट इज इवॉल्व्ड जुडिशियली। दैट सिंपली मीन्स दैट it is not a concept which has been inserted in the Indian Constitution by the Parliament. Judiciary ने धीरे धीरे through its own judgments have evolved this concept of basic structure. किस तरह से करा, हम उस पर आएंगे। We are going to study about the Shankari Prasad case, the Golaknath case, the Minerva Mill, and the one of the most important cases in the Indian history, constitutional history, Keshwananda Bharti case. But before that, it is important for you to understand that this concept has not been inserted in the constitution by the act of the parliament, but it was evolved by the judiciary, not explicitly mentioned in the constitution. Now, the judiciary, while giving the judgment of the Keshwananda Bharti case, has also not defined what is basic structure, but it said that basic elements of the constitution, and if you try to diminish those elements, the impact on the ground will be huge. So that is what is the curb on the nature, power of the parliament under article 368, that parliament does not hold absolute right, absolute power to amend the Indian Constitution. दूसरी चीज दोस्तों, it limits the parliament's amending power under article 368. As I told you, it does not have the absolute पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी तरह से संविधान को चेंज करना है, यह पार्लियामेंट नहीं कर सकती। हमेशा पार्लियामेंट को ध्यान रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी डिमिनिश्ड। अब अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है, पार्लियामेंट को किसी भी एक फंडामेंटल राइट में किसी भी प्रकार का चेंज करना है, तो क्या वो कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है। फंडामेंटल राइट बीइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय भी चेंज हो जाएगा क्या? यस, ऑफ कोर्स। But the change, the amendment has to enrich the fundamental rights. It cannot diminish the fundamental rights. That is very important for you to understand. It protects the core principle and values of the constitution. Core principle और values क्या हो सकते हैं दोस्तों? Parliamentary form of democracy, the federal character in the Indian constitution, the fundamental rights, the directive principle, the important elements such as secularism, equality, liberty, fraternity, all these things, they cannot be changed. Even for that matter, the word socialist, which was inserted in the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act, is also the basic structure of the Indian Constitution and cannot be removed. Now, it ensures continuity of constitutional identity despite amendment. तो एक constitutional identity बहुत जरूरी है. Although constitution is called as the living document which changes with changing realities of the society, but this changing nature does not mean that it loses its identity.
भारत के संविधान की भी एक आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी इन सब फीचर्स से दिखाई देती है। और दोस्तों ये सारे फीचर्स बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं जिनको किसी भी तरह से डिमिनिश नहीं किया जा सकता बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नहीं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द जुडिशरी विल कम इन, द जुडिशरी विल जंप इन एंड विल डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर legislation passed by the parliament to be null and void। और कई बार जुडिशरी ऐसा कर चुका है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पे जब आंच आई थी तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था जिसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया था। और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं विच गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। तो ये जो पावर ऑफ रिव्यू दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करती है जुडिशरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों अब इन एक्ट्स इन केसेस के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करिए। शंकरी प्रसाद केस में, जो कि 1951 का केस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई थी एट दैट पॉइंट इन टाइम। इफ यू लुक एट आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिफाइंस लॉ, but nowhere the definition of law contains the word amendment। दोस्तों लॉ की डेफिनेशन में रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ये सारी चीजें तो आती हैं, ऑर्डर्स आते हैं, सर्कुलेशंस आते हैं, बट अमेंडमेंट नहीं आता है। दैट सिंपली मीन्स दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स अनलिमिटेड, बिकॉज इफ एनी लॉ विच इज इन्फ्रिंजिंग अपॉन द फंडामेंटल राइट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। बट जब लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट है ही नहीं, सो हाउ कैन यू डिक्लेयर एन अमेंडमेंट टू बी नल एंड वाइड। ये सारे केसेस उस समय 1951 में पार्लियामेंट के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनलिमिटेड। दैट सिंपली मीन्स the word amendment is not included in the word law or in the definition of law। but समय बदला, गोलकनाथ केस आया, 1967 की बात है दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। दैट सिंपली मीन्स the interpretation of the judiciary has changed over a period of time from 1951 to 1967, and the judiciary said that the word amendment is also included in the definition of law। that simply means parliament cannot amend the constitution on its whims and fancies, cannot amend the constitution arbitrarily। The unlimited power of the parliament to amend the constitution is not a truth। that is what is said by the Golaknath case। but then by the 24th Constitutional Amendment Act, this is a very important Constitutional Amendment Act, you must remember, 24th Constitutional Amendment Act in 1971, one important clause was inserted in Article 13 of the Constitution, clause number 4, which says that any amendment made by the Parliament will not be included under the definition of Article 13 under the definition of law। So Parliament in a way overturned the judgment of Golaknath case through the 24th Constitutional Amendment Act। Now the constitutionality of this amendment was checked in the Keshwananda Bharti case। In the Keshwananda Bharti case, again the question arose whether the parliament has unlimited power to amend the constitution or not। Keshwananda Bharti case, the Supreme Court has upheld the changes made by the 24th Constitutional Amendment Act। कहने का मतलब है ये जो क्लॉज नंबर 4 डाला गया था इसको अपहेल्ड कर दिया गया। कहा गया ठीक है, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। कहा गया कि ठीक है, ये जो वर्ड अमेंडमेंट है, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ, बट एट द सेम टाइम जुडिशरी हैज आल्सो इवॉल्व्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बाय सेइंग दैट anything which is the part of the basic structure of the Indian Constitution shall not be diminished, shall not be amended in such a manner that it gets diminished। So I hope you are getting this। This basic structure doctrine was introduced, was evolved after Keshwananda Bharti case। It was the most important judgment in the constitutional history ऑफ इंडिया। साथ ही साथ दोस्तों अब आया मिनर्वा मिल केस, 1980 की बात है। इट रीएनफोर्स्ड द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच हमेशा
ये नोक झोंक रहती है that one is justiciable and the other one is non-justiciable. But the directive principle of state policy, although being non-justiciable, are very important for the functioning of the government. And at times, to create an equitable society, there are several provisions, there are several actions which the government has to take. And while taking those actions, if Article 14 of the Constitution, right to equality, Article 19 of the Constitution, right to freedom, they are infringed, then the courts will not do anything much. So this is a very important piece of information which you should have. It is explicitly written in Article 31B and Article 31C of the Indian Constitution. If you read it very carefully, you will find that any changes which has to be made by the government in order to implement Article 39B and Article 39C will be allowed, even if it is infringing right to equality and right to freedom. I hope you're getting this much, but for your basic understanding, it is very important for you to understand the basic structure of the Indian Constitution. It is not written anywhere. It is evolved by the judiciary. It limits the power of the government under Article 368 to make changes, to make amendments in the Constitution. It protects the core principles of the Indian Constitution, and it ensures continuity of the constitutional identity in India. So thank you very much for being with me in this video. Have a nice day and Jai Hind.